हेलो एवरीवन, आज हम बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं एंड वी प्लान फॉर अ वन डे ट्रिप. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, वेरी हिस्टोरिक प्लेस दैट आई वांट टू कवर टुडे, एंड दैट इज़ सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजुकेशनल हब ऑफ यूके. यहाँ से इंडिया के बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पास आउट हुए हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, रामानुजम, राजीव गांधी, हरिवंश राय बच्चन. इवन यहाँ पे जो एक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ नोन एज सेंट जॉन्स कॉलेज, वहाँ पे मनमोहन सिंह की एक स्कॉलरशिप भी चलती है जो इंडियन स्टूडेंट्स को दी जाती है. सो दैट्स लाइक वेरी प्रेस्टिजियस एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Arya is all set. She is saying mama mama in her car seat. Say hi Arya. Hi. Hello. Hello. So now we are starting our trip and it will take approximately 1.5 hours to reach there. लंदन में हर दूसरी गाड़ी या ऑडी है या मर्सिडीज. People are big fan of Audi and Mercedes. Continue on Watford. All And BMW. segments and BMW of course. Cambridge, London से approximately 55 miles, that is approximately 89 kilometers north में है, and we are taking A1 road to Cambridge. आप यहाँ पे एक भी honking नहीं सुनेंगे. So that is the beauty of driving over here. Everybody drives in their own lane. सब लोग अपने अपनी लेन में गाड़ी चलाते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता है. If you are speeding up तो आप दूसरी लेन में करके ओवरटेक कर सकते हैं. और यहाँ के रूल्स भी, ट्रैफिक रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं. You have to always give the right to way. तो यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है पंटिंग, जो कि हम जिसको बोटिंग भी बोलते हैं. और यहाँ पंटर्स बेसिकली आपको पूरी सिटी का राउंड लगाते हैं ऑन रिवर कैम, जो यहाँ की मेन रिवर है. It's a long way, way up to everything that we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we love, it's not a long way, way to the spot where we already are. ये राइड 45 मिनट्स की है. यदि आप शेयर्ड बोट लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 पाउंड लगेगा. फॉर ऑल 3 ऑफ अस वी पेड 60. और यदि आप सेपरेट अपने इंडिविजुअल बोट लेते हैं देन यू हैव टू गिव 120 पाउंड फॉर द एंटायर बोट. और आपको ईच बोट में एक पंटर अलोकेट होगा और वो पंटर आपको थ्रू आउट बेसिकली सिटी के जो मेन बिल्डिंग्स हैं, जो मेन कॉलेजेस हैं, उनकी हिस्ट्री वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा. It's a long way, way up to everything that we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we love. And, these are actually, both these buildings are student accommodation buildings for St John's College. So this is all St John's College around us here. So yeah, St John's dates back to 1511. So this is all the old part of the college on my left of there now. You can actually see, well, you can see the letters at the top there, ILCS. It's called Latin, it stands for John Lincoln, Keeper of the Great Seal. Yeah, you can also see the year there, 1624. Can you see that one? So yeah, 1600, and then 200 years later, they built across the river here in the 1830s and built this beautiful bridge in this backyard to link the two sides of the college together. So yeah, this is the famous smoking hut known as the Bridge of Sighs. And it gets that name because Queen Victoria said it looked like the Bridge of Sighs in Venice.
They don't look too similar though. Yeah, they don't look similar. But no one's going to argue with the Queen, right? So that's where the name comes from. Yeah, the story is that in Venice, you may know, it's a prison bridge. Yes, 1764, that bridge. And then have a look behind us on my right, everyone. You see the front of that new court building there. So that is student accommodation, that building. Not a bad place to go as a student, right? Which one of the royalties went there? To St John's, I don't think any of the royalties have been here to St John's. You had Prince Charles at Trinity actually, so Trinity is the next college just here. I knew it was one of them. Good. Good, Arya. This side. Like Sir Isaac Newton, he was a student here. Also, for example, Lord Byron, the poet. Also, maybe not so familiar name, Raleigh. Any scientists amongst you may have heard of Raleigh scattering. It's how light enters the atmosphere. Yeah, Trinity is by far the wealthiest college in the world. So they own a huge amount of land, not just here in Cambridge, but actually all over the country. So. It's a long way, way up to everything that we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we love, it's not a long way, way to the spot where we already are. The building here is part of Trinity Hall. So the separate colleges, Trinity Hall dates back to 1350, so it's one of the oldest. And that's where Professor Stephen Hawking received his PhD from. So he started off in Oxford, realised he made a terrible mistake, and came here to Cambridge. I'm joking, but yeah, he did do his undergraduates from Oxford, and then his postgraduate studies were done here, and then he stayed here, and he became Professor of Mathematics for 30 years, which is pretty amazing. Moment to get closer, closer to the things we love. It's not a long way, way to the spot where we already are. Stay here under the palm trees. Won't you lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with you. सो यहाँ पे हमारी पंटिंग फिनिश हो गई थी. इसके बाद हमने 2 और अट्रैक्शन शॉर्टलिस्ट किए थे. एक था फिट्ज़विलियम म्यूज़ियम एंड सेकंड वाज किंग्स कॉलेज चैपल, और ये दोनों ही कोविड के कारण क्लोज थे, तो यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है इन टू 2020 समर्स. तो जब खुलेंगे मे बी हम नेक्स्ट ट्रिप में आपको कभी लेके जाएंगे इनसाइड दीज. Closer to the things we love. It's not a long way, way to the spot where we already are. Stay here under the palm trees. Won't you lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. एंड चेरी ऑन टॉप, लास्टली जब हम लौट रहे थे तब हमें चार्ल्स डार्विन का पुराना घर भी दिखा. ही यूज्ड टू स्टे हियर व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज. Stay here under the palm trees. सो दैट वाज इट. ये हमारी कैम्ब्रिज की 1 डे ट्रिप थी. वी रियली एंजॉयड इट क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर गए थे. यदि आप किसी अपने बच्चे के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ 1 डे ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, वी स्ट्रांगली रिकमेंड कैम्ब्रिज, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है और इजीली हमने आर्या के साथ हम मैनेज कर पाई ये ट्रिप. होपफुली यू हैव गॉट सम क्लूज हाउ टू कवर, व्हाट टू कवर ड्यूरिंग दिस समर ब्रेक. दैट्स इट गाइज. So bye for now. Stay safe, stay healthy and travel safe. Take care. Bye bye.